Hello dear student, today is our EVS lecture. So take out your Wonderworld activity book C and open page number 26 and write here today's date, that is 23/11/21. Okay. Now today we are going to learn the term above, below. Above मतलब उसके ऊपर, below यानी किसी के नीचे, on ऊपर, under नीचे. So do as directed. Look at the pictures and fill in the blanks. आपको pictures देखने हैं और blanks fill करने हैं. Okay. See in the first picture, the girl is sitting under the tree. Okay. And read the sentence. The girl is sitting under the tree. Two options are given here, on and under. So correct answer is under. So write here UNDER, under. Okay, the girl is sitting under the table. Okay, now in the next picture, the lamp is dash the table. Two options are given, on the table or under the table. Where is lamp? Table के नीचे या table के ऊपर? Table के ऊपर. So on the table. So write here ON, on. Okay. Now in the next box, see, boat is given here. ड्रॉ अ फिश बिलो द बोट. बोट के नीचे क्या करना है, हमें फिश ड्रॉ करना है. नीचे यानी बिलो यानी नीचे. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ हियर वन फिश. वन फिश यू हैव टू ड्रॉ बिलो द बोट. बिलो द बोट यानी बोट के नीचे वन फिश हमें ड्रॉ करना है. ओके, एंड सी द नेक्स्ट, ड्रॉ टू बर्ड्स अबाउ द बोट. अबाउ द बोट यू हैव टू ड्रॉ टू बर्ड्स. ओके, अबाउ यानी बोट के ऊपर और नीचे, बिलो बोट के नीचे. द गर्ल इज सिटिंग अंडर द टेबल. द लैम्प इज ऑन द टेबल. ओके, नाउ गो ऑन द नेक्स्ट पेज, that is page number 27. Here we are going to learn near, far. Near यानी पास, far यानी दूर. In front of मतलब किसी के सामने. Behind किसी के पीछे. So look here what we have to do. Look at the pictures and fill in the blanks. Pictures देखने हैं और blanks fill करने हैं. So see in the first pictures, bed and lamp is given and read the sentence. The big lamp is dash from the bed. Where, and two options are given, near and far. So big lamp is near the bed or far from the bed? Far from the bed. So you have to underline the word FAR, far, and write here answer FAR, far. Okay, in the second box, bed and table lamp is given and read the given sentence. The table lamp is dash the bed. Near the bed or far from the bed? Near the bed. बेड के नीचे पास है ना, सो नियर द बेड. सो अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट हियर NEAR, नियर. द टेबल लैम्प इज नियर द बेड. नाउ इन द नेक्स्ट बॉक्स, द बॉय इज वॉकिंग डैश द ओल्ड लेडी. इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड लेडी और बिहाइंड द ओल्ड लेडी? पीछे है या सामने? सामने. सो in front of. The correct option is in front of. So write in this box in front, FRONT, front of, in front of the old lady. And the girl is running dash the ball. girl कहाँ भाग रही है? in front of the ball or behind the ball? behind the ball. ball के पीछे भाग रही है ना. So correct option is behind. 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 Okay, table lamp is far from the bed. Big lamp is far from the bed. Table lamp is near the bed. Okay, the boy is in front of the old lady and the girl is behind the ball. Did you understand the term near, far, in front of and behind? Okay, I hope you all understand that. So you have to revise these page number 26 and 27 and complete it. Okay,
Okay, bye bye. Have a nice day.